So what we need to do today is we need to start with some of the machine learning models. हमने अभी तक जो discuss किया है, we have basically got some introduction to what machine learning is all about and how you can compare different models and choose the best models if you have multiple options. But now we'll actually go into the actual algorithms and try to understand how different algorithms work. So in this course, we're going to be discussing two uh, major algorithms जो बहुत ज़्यादा commonly used होते हैं. One is called k nearest neighbors and the other is called decision trees. So today we'll start with k nearest neighbors. The idea is going to be to give you an introduction to how this works on the back end at the back end कि आप अगर जब code कर रहे होंगे तो code में तो आपको of course most of this is going to be handled by the program by R itself लेकिन you should be able to understand कि उसके back end पे वो किस तरह से जो है वो ये classification actually कर रहा होता है वो algorithm exactly क्या है ताकि जब आप उसको interpret कर रहे हो it's going to make much more sense. In terms of the actual coding, what I'm going to do in that with that respect is कि मैं आपको जो है वो code snippets जो हैं वो classroom पे भी post कर दूंगा and I'll also record a short video explaining कि आप ये exact किस तरह से R में run करेंगे. But during our classes, we will mainly be focusing on कि जो है conceptually जो है वो algorithms किस तरह से जो है वो काम करते हैं. ठीक है, so in the remaining classes our focus is going to be on this और जो actual R में किस तरह से आप इसको implement करेंगे code करेंगे that you're going to learn through some data camp assignments and a couple of recordings that I'll post on this. Regarding deadlines of the data camp assignments, I've had a few discussions with some of you and you were having problems with the short deadlines earlier. So for the remaining assignments that we'll have, I'm not going to have any strict deadline for that in the sense कि आप लोगों को 1 week बाद या even in the next couple of weeks आपको इस तरह नहीं होगा कि आपको strict deadline. I'll still recommend some things कि आपको कितना part उसका complete कर लेना चाहिए up until a certain date. लेकिन it's going to be more flexible in the sense कि आपकी एक hard deadline होगी सिर्फ towards the end. So let's say somewhere around 21st or 25th of June. Some date between 20th and 25th of June. तो तब तक आपको वो सारी assignments submit करनी होगी. It's going to be at max 2 or 3. लेकिन हर असाइनमेंट की अलग अलग से कोई डेडलाइन नहीं होगी सो आप अपनी मर्जी से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं उस तरह से ठीक है इफ यू वांट टू डू ऑल ऑफ देम टुगेदर इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 5 to 6 hours on a stretch तो आप वो सारी इकट्ठे भी एक दफा बैठ कर सकते हैं और इट्स गोइंग टू बी अप टू यू आपकी कोई उससे पहले कोई डेडलाइन नहीं होगी ठीक है and in terms of what you've already missed before अगर आपकी पहले कोई assignment miss हो गई है तो वो भी I'll give you a time window again so I have decided on that तो आप जिन लोगों की पहले वाली assignments miss हुई हैं आप दोबारा से submit कर सकते हैं उनको attempt कर सकते हैं अगर आपकी assignments miss हुई हैं with a very minor deduction ठीक है तो वो भी जो है you'll have a chance to do that. Yes, Jalid. Sir, when are the exams? I think they start in the last week of June, but I'm not sure about it yet. There's still some discussions going on, but most probably in the last week of June. As in they'll be starting in the last week of June, but it still has to be confirmed. Okay. Acha. Now let's start with this k nearest neighbors. So first of all, let's consider this example.
let's say you are in some dark dining restaurant. Has anyone of you heard of something like this? There was one in Karachi, at some point, but there are a lot of them in the Western countries, and what they do is you don't have any light inside, so you are basically eating in dark mostly. So let's say you are served a tomato. How do you recognize what you're eating? So that's a problem, right? So we could think of it as a machine learning problem. Now, you're served a tomato. How do you figure out what it is? So what could you think about? You have had some experience of eating different fruits, vegetables in your life before. So you'll try to think about it. अच्छा इसका taste जो है वो किससे जो है वो similar है. So let's say you have never eaten a tomato before, but it's similar to something some other to the taste of some other fruits or vegetables, and we need to figure out based on that के ये exactly जो है, is it a fruit, is it a vegetable, or what kind of uh, what exactly it is, ठीक है? So your previous food experience is on these different things. So you've had apples, you've had bananas, carrots, and some other fruits and vegetables. And what you do is you can categorize each of those ingredients based on some characteristics. So an apple, if you were to characterize it, uh, if you had to assign a number to it in terms of its sweetness, in terms of its crunchiness, you could come with some numbers from 1 to 10. Ki acha, if it's very sweet, you would give it give it a 10. If it's not very sweet, you'll give it a very low number, let's say 1 or 2, and similarly for crunchiness as well. Okay. And then you have another category that is the fruit type, and that's actually what you want to predict eventually. Okay, what type of fruit it is? Is it a fruit? Is it a vegetable, or is it something else? Okay. So you have these different options based on the sweetness and crunchiness of that substance. You want to predict whether what type of fruit it is. Okay, that's what you want to do. This, and your future food experience is about these different things. Okay. Now, based on this, what you want to do is you want to predict what you're eating, whether that is a fruit, whether it is a vegetable, or it's a protein. Does that make sense? Any problems here? So what you'll do is, अगर आपके पास सिर्फ वो दो variables होते, you have sweetness and crunchiness, जिसकी base पर आपने इसको classify करना है. What you could do is you could plot it on a Cartesian plane like this. आपके पास ये coordinate system है. You have crunchiness on one axis, you have sweetness on the other axis, and you simply plot all of those fruits based on their sweetness and crunchiness. So the things that you have here at bottom left, uh, they're very low in terms of sweetness and crunchiness. And what you have at the top right here, they are very high in terms of sweetness and crunchiness. Okay, so you can have a look at all of these fruits and vegetables here. Somebody wants to say something? Achha. Please keep your mics muted if you do not have a question. You only unmute yourself if you want to ask something or say something. Okay? Achha. So you've plotted all of these fruits and vegetables like this on this plane. And based on this, you want to basically figure out कि अच्छा tomato जो है वो किस type, कौन सी type है? Is it a fruit? Is it a vegetable? So आप क्या करेंगे सबसे पहले? After eating, you would try to think about, okay, how would you rate it in terms of sweetness? How would you rate it in terms of crunchiness? Okay, and you come up with some numbers, and then what you do is you plot that here. Okay, but before that,
you try to understand कि जो आपने ये सब कुछ जो है यहाँ पे प्लॉट किया था, how would you categorize these different things? So fruits generally, from your experience, they are high in terms of sweetness, and their crunchiness varies. There are some fruits which have a very low crunchiness, and there are some fruits which have high crunchiness. Vegetables generally, they are not very high in terms of sweetness. They're somewhere to from low to medium in terms of sweetness, but in terms of crunchiness, they are generally high. Proteins, they are low on both of these, both sweetness and crunchiness. Okay? And based on this information that you know about fruits, vegetables, and proteins, you want to figure out something about tomatoes. So आपने जो है वो खाया, and you categorize this. You came up with some numbers for tomatoes for sweetness and crunchiness, and it turns out you would place it somewhere here. ठीक है, आप यहाँ पे उसको place करेंगे in terms of sweetness and crunchiness. So you would rate it somewhere around, let's say 6 or 7 in terms of sweetness, and crunchiness, let's say you rated it about 3 to 4. Okay? And when you placed it here, it came out to be at this position. Okay? And now you want to classify whether it's going to be a fruit or a vegetable or a protein. Okay? That's what you want to figure out. Now let's see how a k nearest neighbor method would work in this case. So k nearest neighbor, इसमें k जो है, that's a variable. So you could think about a 1 nearest neighbor, you could think about a 2 nearest neighbor, you could think about a 3 nearest neighbor. And let's see what each of these things means. 1 nearest neighbor would mean कि आप इसका 1, so as the term suggests, you would look at the nearest neighbor. So आप इसके आसपास वाले जो है वो substances देखेंगे, and you'll only look at one thing in this particular case. So since it's a 1 nearest neighbor, you'll only look at one neighbor. So आप अगर इस case में बात करें, tomatoes are closest to oranges. ठीक है, आप सिर्फ क्योंकि एक nearest neighbor देख रहे हैं, you'll only consider this orange here. ठीक है, and since oranges are fruits, you would say that tomato is also a fruit. ठीक है, so based on this, आप देखेंगे उसका nearest neighbor क्या था in terms of sweetness and crunchiness, and you'll say since orange is a fruit, tomato is also going to be a fruit. ठीक है, so that's one way to think about it. Another way to think about it is कि आप एक nearest neighbor के बजाय you consider two nearest neighbors. So आप देखेंगे, अच्छा, let's look at the two closest things to a tomato in terms of sweetness and crunchiness. So the closest was orange, the next closest is grapes. ठीक है, and then what you do is you think about what oranges are. Oranges are fruits, and grapes are also fruits. Since both of these are fruits, you say tomato is also a fruit. ठीक है, another way could be, instead of 1 or 2, you say कि मैं 3 nearest neighbors देखता हूँ. I look at 3 nearest neighbors. So the closest was orange, the second closest was grapes, the third closest is nuts here. ठीक है, now oranges were fruits, grapes were fruits, but nuts are proteins. So now you have a conflict. So you have two fruits and you have one protein. So how do you classify tomato? So we'll say you look at whatever is the majority class here. So out of 3 neighbors, 2 are fruits and only 1 is protein. So you would say, since the majority of the neighbors are fruits, so tomato is also a fruit. So 2 out of 3 of the nearest neighbors are fruits, hence tomatoes are also fruits. Okay, so this is basically the idea behind nearest neighbors कि आप closest देखते हैं आपके around क्या है,
and then you classify based on that. Any question on this? Does this make sense? Is this clear? Yes, Yes. sir. Okay. So that's the motivation behind this. But how does it work in practice? So this was a very simple example. Let's look at the different cases. So you could be looking at the nearest neighbors for classification. You could be looking at nearest neighbors for regression. So remember, classification was कि आप different categories में classify कर रहे हैं. Regression is कि आप कोई numerical outcome predict करना चाह रहे हैं. ठीक है? So let's look at classification first. So जो अभी हमने example देखी है, this was an example of classification जहाँ पे हम fruits, vegetables या proteins में classify कर रहे थे. So let's look at how the algorithm is going to work here. So let's say you have n training samples. So training samples का मतलब है कि आपके पास number of observations जो हैं they are n. ठीक है? And you have variables. So अच्छा, let me explain you this notation first. So I means I stands for observation here. ठीक है? So I, अगर I1 है, so that means it's the first observation. I2 means the second observation. I3, अगर I की value means I की value अगर 3 है, that would mean the third observation. I की value अगर 4 है, that would mean the fourth observation, and so on. ठीक है? The second number here represents the variable that you're talking about. Okay, so the variable, let's say if you have p variables, so p is just a number, so you have, let's say, p variables. So this one means you're talking about the first variable. If agar ye second number jo yahan pe hai, if this was 2, you would say you were talking about the second variable, and you go all the way to the pth variable. Okay, so I is the row that you're talking about, and the second number here is going to be the column that you're talking about. Okay, so what you understand from this is कि आपके पास n observations हैं, and you have some independent variable जो आपने x से represent किया हुआ है यहाँ पे, and you have an output variable जो हमने यहाँ पे y से represent किया. ठीक है? I hope this is clear. And now you have a new data point जो हमारे उस केस में, for example, tomato था. So you have a new data point जहाँ पे आपको सारे उसके input variables पता हैं, x variables पता हैं, and you need to figure out what the outcome is going to be for this new data point, right? That's the goal of machine learning algorithm based on the historical data that you have, जहाँ पे आपको input outputs दोनों पता हैं, you learn something from that data, and you use that information, you use that learning on a new data point to assign a particular outcome to that, okay, based on what you've learned before. Now, how does the algorithm work? आप देखेंगे आपके पास n training samples थे, so let's give it a number. So n, let's say आपके पास 1000 observations, ठीक है, 1000 observations है. k nearest neighbor की अगर बात करें, so k nearest neighbor, so let's say मैं यहाँ पे k की value भी एक assign करता हूँ. Let's say I'm talking about 5 nearest neighbors. So मैं क्या करूँगा, आपके पास ये जो new data point है, जो new data point है, what I'm going to do is I'm going to look at 5 observations. अगर मैं 5 nearest neighbor की बात कर रहा हूँ, अगर मैं k की value 5 consider कर रहा हूँ, of course this is also going to be a decision कि आप 1 nearest neighbor करेंगे, 2 nearest neighbor करेंगे, 10 nearest neighbor करेंगे, 15 nearest neighbor करेंगे, या कौन सा choose करेंगे exactly. But let's say in this case you were talking about a 5 nearest neighbors, a 5 nearest neighbor algorithm. In that case, what you'll do is, for this new data point, आपके पास जो 1000 observations थी, from those 1000 observations, you're going to look at 5 observations that are closest to this data point. ठीक है? You're going to look at 5 observations that are closest to this new data point. और फिर उन 5 observations में से आप इस न्यू डेटा पॉइंट को वो कैटेगरी असाइन कर देंगे जो भी मेजॉरिटी कैटेगरी है फ्रॉम दोज 5 ऑब्जर्वेशन. ठीक है?
So let me repeat. आप distance measure करेंगे of this new data point from each of those 1000 observations. ठीक है, आप इस न्यू डेटा पॉइंट का हर ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी आपके पास 1000 ऑब्जर्वेशंस थी। बाकी आप देखेंगे लोएस्ट डिस्टेंस जो है वो किन के साथ है। सो आप 5 ऑब्जर्वेशंस ऐसी सेलेक्ट करेंगे जिनका इस न्यू डेटा पॉइंट के साथ लोएस्ट डिस्टेंस है। आप देखेंगे उन 5 जो ऑब्जर्वेशंस है जिनका लोएस्ट डिस्टेंस था, उनमें मेजॉरिटी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, सो लेट्स से 5 में से जो है 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में से हैं। There's one observation that's from another category and there's another one observation that's from a different category. ठीक है, so अब majority category कौन सी होएगी, जो आपकी जिसमें 3 observations है, तो we're going to say कि new data point क्योंकि closest है to those 5 observations, और उन 5 observations में से 3 जो observations है they are from one particular category, so ये new data point जो है वो भी वही category होगा। Does this make sense? Any question on this? एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर आप एक दफा ये बता दें कि आई और पी वाले में फर्क क्या था? So इंडेक्स आप इस okay, so this is x, आप ये इसको ऐसे कंसिडर करें x I j। तो ये अगर आप इसको इस तरह देखेंगे, let me see if I can write here. Is there a way to do it? Sure. Okay, let me try if it works. So आपके पास इस तरह से ये है। Okay, doesn't seem to be working. Okay, sorry, it's not working. I cannot write like this. Okay, no, I can. अच्छा, sorry, I can't figure out a way to write here. आपके पास let's say x I j लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है? So you have x और फिर नीचे सबस्क्रिप्ट में you have I and j, ठीक है? I represents the row and j represents the column. So अगर यहाँ पे I है तो that means it's the ith observation क्योंकि वो rows represent कर रही है, and 1 means the first variable. j आपका कॉलम रिप्रेजेंट करे, कॉलम्स के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। so 1 means the first variable, 2 would mean the second variable and so on until p। आपके पास टोटल अगर p वेरिएबल्स हैं, so आपके ip would mean ith observation और pth आपका वेरिएबल। does that make sense तलहा? तो सर ये फ्रूट वाली एग्जांपल पे किस तरह मैप होगा? कौन सा फ्रूट? अच्छा, these are just notations, you don't need to get yourself confused with that। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी observation है, ठीक है? ये rows में जो data है, these are the observations। so this is the first observation, ठीक है? this is यहाँ पे i की value 1 होगी, ये second observation है, i की value 2 होगी, ये third observation यहाँ पे i की value 3 होगी and so on। you have 2 variables here, 2 input variables, so this is the first variable। यहाँ पे आपका j की वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पे j की वैल्यू 2 है and so on। so अगर number of variables वहां पे p थे total, तो यहाँ पे p is equal to 2 क्योंकि आपके पास 2 variables हैं। does that make sense तलहा? यस सर, ऑलराइट। so वो सिर्फ notations हैं। अगर आपको वो confuse कर रही हैं, so you don't need to understand, don't need to go into too much detail there। basic idea is कि आप ये देखेंगे कि जो भी आपका न्यू डेटा पॉइंट है, आप उससे क्लोजेस्ट देखेंगे उसके कौन से ऑब्जर्वेशन है, बाकी उनमें जो भी मेजॉरिटी कैटेगरी होगी वो आप असाइन कर देंगे उसको, ठीक है? बट द प्रॉब्लम नाउ इज
अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन सॉरी ये भी था कि उस पे ये एल्गोरिदम किस तरह से मैप होगा. ओके, सो लेट्स गो टू दैट डेटा अगेन. आपके पास ये डेटा है, ठीक है, एंड यू हैव अ न्यू ऑब्जर्वेशन दैट इज ऑफ टोमेटोज. ठीक है, अब टोमेटो को भी आपने रैंक कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्वीटनेस एंड क्रंचीनेस. आपने स्वीटनेस का इसको 6 असाइन कर दिया, क्रंचीनेस का इसको आपने 3 असाइन कर दिया. ठीक है, आप देखेंगे ये जो लास्ट आप जो टोमेटो वाली ऑब्जर्वेशन है उसका आप डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम ईच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन. तो आप उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे एप्पल्स के साथ, ये सेकंड आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, बट इसके साथ मेजर करेंगे, बनानास के साथ, कैरेट्स के साथ, एंड सो ऑन. फॉर ईच of these observations you'll measure its distance from tomato. ठीक है, that's what this first point of the algorithm is, कि आप distance measure करें सबके साथ and then you find the observations that have the smallest distance. ठीक है, कितनी observations that will depend on कि आप 1 nearest neighbor की बात करें, 2 nearest neighbor की बात करें, 3 nearest neighbor की बात करें, एंड और आप जो भी आपका k की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी ऑब्जर्वेशन चाहिए. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड स्टेप इज कि जो आपने वो सेलेक्ट किए थे, लेट्स से आप 3 नियरेस्ट नेबर्स की बात करें, आपको पता चल गया कि these are the 3 observations that are closest. So you have nuts, you have grapes, you have oranges that are closest to this new data point. That was tomato. Tomato was the new data point. उस पे 3 closest observations कौन सी हैं? ये जब पता चल गया, आप देखेंगे उन तीनों observations में जो फ्रूट टाइप था, या सॉरी जो आपकी जो भी इंग्रेडिएंट है उसकी जो टाइप थी वो क्या थी. इनमें से 2 की फ्रूट है, एक की प्रोटीन है. यू वुड सी के जो भी मेजॉरिटी कैटेगरी है आप न्यू डेटा पॉइंट को वही मेजॉरिटी कैटेगरी असाइन कर दें. ठीक है, दैट्स द सेकंड स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिथम, कि जो भी मेजॉरिटी कैटेगरी होगी वो आप असाइन कर देंगे उसको. डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. Okay, so this is how the algorithm works. But the problem is, एक तो आप डिस्टेंस किस तरह से मेजर करेंगे. ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास हमने सिर्फ इस तरह से सिर्फ विजुअली देखा है कि हम इसको देख रहे हैं अच्छा किन से करीब है. बट आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं इनकी. आप डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं बिटवीन दीज ऑब्जर्वेशन? एप्पल का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे टोमेटो के साथ, राइट? दैट्स अ क्वेश्चन. So that's the first thing. How do you measure the distances? ठीक है, and then right now we're talking about numerical predictors, numerical variables. आपके पास crunchiness जो था वो भी हमने एक तरह से उसको number assign किया था कोई from 1 to 10, और जो दूसरा variable था sweetness उसको भी हमने एक number assign किया था from 1 to 10. What if you have binary or categorical variables instead? उनका distance कैसे find कर सकते हैं? ठीक है, that's the second question. And the third question is, how do you choose the value of k? आप 1 nearest neighbor करेंगे, आप 2 nearest neighbor करेंगे, आप 10 nearest neighbor करेंगे, how would you know that? ठीक है, these are the 3 questions that we need to answer in order for this algorithm to work. So let's start with the first question, how do you find the distance? So distance के लिए normally there are going to be 2 options that you have. One is going to be the Manhattan distance and the other is going to be the Euclidean distance. Okay, the maximum distance, this is just a mathematical thing, I'm not going to go into that, but basically the idea is, again, आप notation से बहुत ज़्यादा confused नहीं होना, these are just formulas, but essentially what it means is, अच्छा, do you know how, has anyone heard about how the roads are designed, how the city of Manhattan is designed? Any idea? How the roads are, do you know if there's something special about how the roads are designed there?
Has anyone heard about this? मैनहट्टन में किस तरह से रोड जो है वो डिजाइंड है? I see something in the chat there. Distance is equal from the center of Manhattan. How is that possible, sir? हर जगह का distance equal कैसे हो सकता है from the center? Or do you want to say something else? सर zigzag तो नहीं? Zigzag? Like वो मतलब सर जिस तरह ये distance भी तो काम करता है. Okay, so Manhattan में basically the roads हैं ना, they are all perpendicular. So आपकी एक grid की तरह है, ठीक है? In the center of the city at least, आपके पास इस तरह vertical और horizontal. This is how the roads are. मतलब कोई slanted नहीं है, कोई angles जो है ना between roads, they're all like almost 90 degrees. ठीक है, उस तरह से grid की तरह designed है. So if you look at this graph here, आपके पास एक point यहाँ पे A है, you have another point here that is B. आपको A से B पे जाना हो ना, तो आप क्या करेंगे? आप let's say टैक्सी पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, you'll be going like this. ये जो आपके पास purple line show हो रही है ना यहाँ पे, you're going to be going like this. आप यहाँ पे इस तरह जाएंगे, फिर right turn लेंगे, फिर left, right, left, right, left. अब यहाँ पे मैप देखें, they're all all the roads there, they are at 90 degrees. बिल्कुल जो है देखें रेक्टेंगल्स बने हुए हैं सारे उस तरह से. So आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो आप इस तरह जाएंगे. आप कोई भी रोड लेंगे तो आपका इस तरह से डिस्टेंस आ रहा होगा, समथिंग हॉरिजॉन्टल, समथिंग वर्टिकली, देन हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल एंड सो ऑन. सो आपके पास एक डिस्टेंस मेजर जो है वो ये हो सकता है कि आप इस तरह से इसी पाथ को फॉलो करें. Now you could take any path, of course. आप यहाँ पे now it would have been easier to explain if I could write something, but let's try to understand it like this. आप यहाँ पे जिस तरह तलहा ने कहा, आप zigzag यहाँ पे कोई भी path follow करें, the distance is going to remain the same. This is called Manhattan distance because of this कि आप वो city designed इस तरह से कि आप यहाँ पे along the roads जो है आप जा रहे हो, तो इस distance को हम कहेंगे Manhattan distance from A to B. There's another type of distance and that's called Euclidean distance, और वो आप यहाँ पे straight line से measure करेंगे. So let's say if you were flying from one place to the other, this might be the path that you follow from A to B, that you could go directly in a straight line like this. So this is the difference between the two distances. Manhattan would be like going along the roads, कि आप पहले एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर आप टर्न लेते हैं, फिर आप उधर टर्न लेते हैं, and so on. And Euclidean would be that you're just going in a straight line from one point to the other. ठीक है? The most common distance measure that you would see is this Euclidean distance. जो आप पहले आपने coordinate system में भी जो आप coordinate geometry पढ़ते थे किसी point पे, this is what you used to do. आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करते थे? यू यूज्ड टू डू x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. आप जो x जो है कंपोनेंट और y कंपोनेंट को स्क्वायर करते थे और उनको ऐड करके फिर आप स्क्वायर रूट ले लेते थे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका डिस्टेंस होता था. यूक्लिडियन डिस्टेंस इज एग्जैक्टली दैट, कि आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. मैनहट्टन डिस्टेंस इज कि आप इस तरह से पाथ फॉलो कर रहे हैं. So these are the two common distance measures that are used to find the distance between points. So the exact formula is going to look like this. कि आपके पास एक point है. This is the new point. So let's say x. Let me actually explain it using this data here. So आपको distance measure करना है, let's say between these two observations. असल में तो हम new data point का और इसका कह रहे होंगे, but यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये numbers लिखे हुए हैं, so let's say आपको distance measure करना है between apples and this second substance here. आपको इनके दरम्यान में distance find करना है.
हाउ डज इट वर्क? आप क्या करेंगे, आप 10 और 1 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है? 10 minus 1, that will give you some value, that gives you 9 in this case, and you find the distance difference between 9 and 4, that gives you 5 in this case, ठीक है? अभी अगर नेगेटिव आ जाता तो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करते, ठीक है? सो 10 minus 1 gives you 9, 9 minus 4 gives you 5, और बस 9 आ गया यहां से और 5 आ गया यहां से, you're going to add both of them, ठीक है? You add both of them, 9 plus 5 you get 14, ठीक है? If you go to this formula here, that's what it means. आपने दोनों के डिस्टेंस फाइंड किया, दिस इज वन ऑब्जर्वेशन, दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, दोनों का आपने डिफरेंस फाइंड किया, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, ठीक है? एंड यू डू द सेम फॉर एवरी वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स थे सिर्फ, स्वीटनेस एंड क्रंचीनेस, आपने स्वीटनेस के लिए किया, क्रंचीनेस के लिए किया, एंड देन यू सिंपली ऐड बोथ ऑफ देम। सो आपने 9 और 5 को ऐड कर दिया, यू गेट 14 आउट ऑफ दैट। दैट्स हाउ मैनहट्टन डिस्टेंस वर्क्स। डज दिस मेक सेंस? आपने हर वेरिएबल का डिफरेंस फाइंड किया, ठीक है, सेपरेटली, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की ली और उन सबको ऐड कर दिया, राइट? सिमिलरली यूक्लिडियन डिस्टेंस, यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूज की बजाय आप क्या करेंगे, आप उनके स्क्वायर्स यूज करेंगे, हर डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, उन सबको ऐड कर लेंगे और फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड पे। That gives you the Euclidean distance. So for example, in this particular case, आपके पास फर्स्ट वेरिएबल में क्या होएगा, 10 minus 1, what does that give you? That gives you 9. 9 का आप absolute value की बजाय, अब इस केस में Euclidean distance के केस में you will be squaring this, 9 square, that is 81. Similarly, you do the same here, 9 minus 4, that is 5. 5 का square gives you 25. 81 plus 25, ठीक है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया, दैट गिव्स यू 106, और फिर आप एंड पे इवेंचुअली क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है? यू विल टेक अ स्क्वायर रूट and that will give you the Euclidean distance. So these are the two distance measures that are most common, and even between these two आपका Euclidean distance जो है वो सबसे ज्यादा commonly आप use कर रहे होंगे to find the distance between two observations. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे, हमने उनको कंसीडर किया, अब बस ज्यादा वेरिएबल्स हैं, the process is going to remain the same. ठीक है, आप उन सबको स्क्वायर करेंगे, ऐड करते जाएंगे और फिर इवेंचुअली आप उनको स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका, ठीक है? दैट गिव्स यू यूक्लिडियन डिस्टेंस. So this is how you determine the distance between mirrors. Achha, let me look at the chart. Okay, so there are no questions, I guess. So let me know if you have any questions on this. You can just unmute yourself and ask if you have to, because I sometimes forget to check the chat. So you can just ask the question directly. So that's the first thing. That is how you're going to find the distance. Now the second thing here, isi distance ke saath, there's another point, and that is this nearest neighbors method is actually very sensitive to scaling. And what that means is कि यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स थे पहले, that were crunchiness and sweetness, ठीक है? उनको हम मेजर कर रहे थे from 1 to 10. Now let's say आपके पास एक और वेरिएबल है spiciness, ठीक है? So I'm not sure if that's a word, but let's say spiciness जो है अब वो भी मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है? And there's some scale that you use for spiciness, and that's called the Scoville scale. और उसकी values जो हैं, they can go from 0 to like 15 million. ठीक है, बहुत ज्यादा वेरी कर रही है. So हमारे बाकी दोनों वेरिएबल्स क्या थे?
they were from 1 to 10. ये वेरिएबल क्या है? It's going from 0 to something around 15 million. ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्ट सा बना हुआ है कि कौन से डिफरेंट जो चीजें हैं वो किस स्केल पे लाई करते हैं इस स्केल के अकॉर्डिंगली. ठीक है, कहाँ पे लाई करते हैं. So red chili, for example, would lie somewhere between 500, 750, and so on. Right? Now, let's say this was another variable that was added to your data. Now, what would happen to your algorithm in this case? The problem that it gives you is कि जब आप distances measure कर रहे होंगे ना, since the other two variables were only going from 1 to 10, this variable is going from 0 to 15 million. So इसकी range बहुत ज़्यादा है, range बहुत बड़ी है. ये variable जो है, it's going to outweigh all the other variables. ठीक है, अब इसमें देखें for example किसी दो चीजों की spiciness that could have a difference of let's say 500. ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे let's say 5000 भी हो सकता है. अगर स्पाइसीनेस जो है वो 5000 स्पाइसीनेस का जो डिस्टेंस है वो 5000 है, और लेट्स से लेट मी गो बैक देयर, स्वीटनेस और क्रंचीनेस का डिस्टेंस लेट्स से वो बहुत ज्यादा भी हो तो कितना मैक्सिमम हो सकता है? मैक्सिमम 9 हो सकता है. यहाँ पे भी मैक्सिमम 9 हो सकता है. सो दैट 5000, even though 5000 is not a very big number considering the range is from 0 to 15 million, 5000 is going to outweigh any difference that is there because of crunchiness and sweetness, because uska scale बहुत छोटा था यहाँ पे. So 5000 in this case is relatively small. अगर आप 15 million के 15 million के relative देखें, and 9 would be very big अगर आप यहाँ पे इस 1 to 10 scale में देखें. लेकिन जब आप distance measure कर रहे होंगे, that 5000 is going to outweigh this distance of 9 here. क्यों? Because 5000 is a very big number. So जो Manhattan distance है, Euclidean distance, आप जो भी calculate कर रहे होंगे, 5000 की weightage बहुत ज़्यादा हो जाएगी as compared to sweetness and crunchiness. तो sweetness और crunchiness में जो भी differences हो या जो भी similarities हो, वो एक तरह से बिल्कुल ignore हो जाएंगे, and spiciness is going to take over. Does that make sense? तो यहाँ पे मसला ये होता है कि आपको जो scales हैं वो comparable रखने पड़ते हैं. So in this case, it would not be a very good idea to have a scale of 1 to 10 from two variables, and to have a very different scale for spiciness, because that's going to mess up your results at the end. So for any nearest neighbor algorithm, the first step that you will need to do is to normalize your data, to standardize your data. ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि आप उसका स्केल जो है वो एक तरह से सिमिलर करते हैं. अब स्केलिंग के आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं. वन इज कॉल्ड मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन एंड अनदर इज कॉल्ड जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन. जी स्कोर जो है इसमें आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन यूज करते हैं. मिन मैक्स में आप सिंपली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की बेसिस पर उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं. सो अगेन the formulas here look a bit complicated, but they're really not so much. यहाँ पे सिर्फ notations सिर्फ इस तरह की हैं. What I'll do is I'll also share the formulas in some simpler notations as compared to what you have in these slides, so that they might be easier to understand. But what this means here is आपके पास कोई भी new data point है. Min max normalization की बात करते हैं आगे पहले. Min max में आपके पास let's say एक observation है यहाँ पे. Yeah, let's think about this. In fact, let's go there. Yeah, okay.
सो आपके पास एक डेटा पॉइंट है, कोई भी आपके पास यहाँ पे येलो हर्ब्स आपके पास शो हो रहा है यहाँ पे, are these herbs or sorry I can't read properly, yellow hot, okay, so this is probably some sort of a sauce. It has a spiciness of 5000 let's say, ठीक है। अब 5000 जो नंबर है इसको आप स्केल करेंगे। सबसे पहले स्केल करने का तरीका क्या होएगा, you look at this formula here, 5000 is your ओल्ड वैल्यू। ये न्यू वैल्यू का मतलब जो स्केलिंग के बाद आपकी जो न्यू वैल्यू आ जाएगी, ओल्ड वैल्यूज की जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू इन दिस केस वाज 5000। 5000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। सो 5000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। मिनिमम वैल्यू इस वेरिएबल की क्या हो सकती है, 0। सो 5000 माइनस 0, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गोइंग टू हैव इन द न्यूमरेटर हियर, ऑलराइट। And then in the denominator, you're going to have maximum minus minimum, ठीक है। So maximum minus minimum, कि maximum value इसकी क्या हो सकती है, 15 million minus minimum that is 0। तो eventually आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा yellow heart के लिए, it's going to be 5000 divided by 15 million। और ये आपने एक तरह से उसको स्टैंडर्डाइज कर स्केल कर लिया उसको, 5000 डिवाइडेड बाय 15 मिलियन, दैट्स गोइंग टू गिव यू सम वैल्यू। ये आप इस वेरिएबल को आप इस तरह से स्केल कर सकते हैं। सिमिलरली यू वुड हैव टू स्केल दीज अदर वेरिएबल्स एज वेल। स्वीटनेस को अगर आप स्केल करें, अगर आप ये फर्स्ट वैल्यू को फॉर एग्जांपल करें, सो व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 10। 10 में से मिनिमम वैल्यू माइनस की, मिनिमम क्या हो सकता है, 1। So 10 minus 1 that gives you 9. तो 9 आपके न्यूमरेटर में होगा for apple's sweetness। 9 आपके न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में you're going to have maximum minus minimum। so maximum value आपकी क्या हो सकती है 10, minimum value आपकी क्या हो सकती है 1। so it's going to be 9/9 and that's going to give you a value of 1 here, ठीक है, for apple's sweetness। एप्पल स्वीटनेस की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे देखें 10 आपकी वैल्यू थी, उसमें से आपने मिनिमम वैल्यू माइनस कर दी, यू गेट 9 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 1 है, तो 9/9 आपको 1 वैल्यू मिल गई। आपने इसको भी स्केल कर लिया। सिमिलरली आप बाकियों को भी यहाँ पे हर वैल्यू को स्केल कर सकते हैं। So what this does is it basically converts your data to values between 0 and 1। तो आपकी सारी वैल्यूज जो होंगी मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 0 और 1 के दरमियान में आ जाएंगी, ठीक है। So this is going to work well when your data is roughly uniform। तो आपके पास कोई आउटलायर्स नहीं है as such, तो उस केस के अंदर this is a fairly good scaling। अगर आपके पास आउटलायर्स हो तो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वाली वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। So in that case, min-max normalization would not work very well. But when your data is roughly uniform and it does not have outliers, min-max normalization is going to work fairly well, and it's going to transform your data to values between 0 and 1. Okay, that's one possibility. आप min-max normalization use कर सकते हैं. The other possibility is to use z-score normalization. Again, all of you have done it at some point in your metric or O levels, or in your FSC and A levels, in statistics। आप जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसमें से आप उस वेरिएबल का मीन माइनस कर देंगे, ठीक है। म्यू आपका मीन रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम कहते हैं जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप उस 5000 की बात करें जो हम पहले कंसिडर कर रहे थे येलो हार्ट के लिए, सो यू पुट 5000 हियर
ठीक है, you subtract from that the mean of all the observations you have for that particular variable. So spiciness की जितनी भी observations होंगी, जितनी भी values हैं, उन सबका mean find करेंगे. आप 5000 में से उस mean को subtract कर देंगे, and you'll divide this number by the standard deviation of spiciness. Standard deviation से आप divide कर देंगे, and that will normalize your data according to the z-scores. This is a good measure. This is a good scaling method when you have outliers in your data. ठीक है, उनको outliers बहुत ज़्यादा affect नहीं कर रहे होंगे आपकी scaling को. Now, in this case, your values could be negative as well as positive. ठीक है, जो mean के करीब values होंगी वो 0 के करीब होंगी इस केस के अंदर. जो mean से बड़ी values होंगी they're going to be positive. जो mean से छोटी values होंगी they're going to be negative. But your data is going to be on a similar scale now for every variable. ठीक है, so आपके पास ये problem नहीं होगा कि बड़े जिनकी range जो variables जिनके बड़े numbers हैं वो outweigh नहीं कर रहे होंगे बाकी variables को. All of them are going to have similar weight, and that's what you ideally want, कि सारी variables को आप same weight assign कर रहे हो. ठीक है, and that's possible through these normalizations of scaling. Yes, these assign equal weightage to all variables. Yes. So yes, so if you want to assign different weightages, आप simply क्या करेंगे, जब आपने scaling कर ली सबकी, अगर आप let's say किसी variable को twice as the other variables weightage देना चाहते हैं, तो आप उसकी सारी values को 2 से multiply कर देंगे. ठीक है, and then when you are running the k nearest neighbors method, वो एक तरह से उसको double weightage मिल जाएगी as compared to the other variables. So after scaling, if you want to actually if you want to have different weightages, किसी variable को आप ज़्यादा weightage देना चाहते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा weightage देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उस variable की सारी values को let's say आप twice weightage देना चाहते हैं, 3 times ज़्यादा weightage देना चाहते हैं, उस value से multiply कर देंगे, and the k nearest neighbors method would give the weightage accordingly. उसके हिसाब से. ठीक है, but that's going to be after scaling. आप एक दफा सबको equal weightage कर लेंगे, उसके बाद आप देख लेंगे अगर आपने किसी variable को ज्यादा या कम weight करना. Right? So this is the second step. In fact, the first step आपने scale करना है variables को. This is going to be important before you apply the distance measures. ठीक है? So now you're going to find the mean and the standard deviation on your training data. ठीक है, आप training data के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो आप जो mean और standard deviation find करें या minimum या maximum values find करें, आप ये training data के ऊपर या at max जो है validation data को use करके आप ये values find कर रहे होंगे. ठीक है, और फिर जो new data point आपका होगा जिसके ऊपर आपने prediction करनी है, उसके ऊपर आप यही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे. यानी जो मीन आपने ट्रेनिंग डेटा या वैलिडेशन डेटा से फाइंड किया था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने वहां से फाइंड की थी, अब वही ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास न्यू डेटा पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल टोमेटो की जो स्वीटनेस, क्रंचीनेस और स्पाइसीनेस होगी, उसको भी आप यूजिंग द सेम मेथड आप सारे वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज करेंगे पहले, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द डिस्टेंसेस. ठीक है, so that's the first step कि आप स्केल करेंगे और आप फिर उसके डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे. Right? The second problem is, what if you have binary or categorical predictors? Well, what you do is, if you have binary variables, आप एक dummy variable create कर लेंगे. Now all of you already know what dummy variables are. Dummy variables are basically variables that have a value of 1 or 0. So let's say if you have a gender variable in a particular problem, तो उसकी values अगर पहले थी male या female,
आप उसकी बजाय एक बाइनरी वेरिएबल, आप डमी वेरिएबल आप एक क्रिएट कर लेंगे, इट कुड बी मेल और फीमेल। आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यूज होंगी, अगर मेल वेरिएबल है तो वो 1 होगा इफ इट्स अ मेल, और 0 होगा इफ इट्स अ फीमेल। तो आप उसको इस तरह से न्यूमेरिकल वेरिएबल में एक तरह से कन्वर्ट कर लें, ठीक है। एंड देन यू विल यूज द सेम मेथड, आप उसी तरह से डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं, उसी तरह से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इफ यू हैव a categorical predictor that has more than 2 possible values? Yani it's not a binary variable, it's a categorical variable with more than 2 possible values. In this case, you're going to have, so there are two possibilities here, sabse pehle. So one possibility is you have ordinal variables. Ordinal variables वो होते हैं जिनके अंदर कोई inherent order होता है. So for example, hot, medium, cold, अगर आप hot से cold पे जा रहे हैं, एक order है in a sense, ठीक है. एक आप grades की बात करें, A, B, C, D, E, इनमें भी एक order exist करता है. These are ordinal variables. अगर आपके पास ordinal variables हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक dummy variable create करें जिसकी values हो 1, 2, 3, 4 and so on, based on whatever you had initially. अगर hot की value आप जो है वो cold की value आप 1 देना चाहते हैं, 2 की value medium की value 2, hot की value 3, तो this scale would mean कि जितनी आपकी high value है उतना ज़्यादा hot है, जितनी आपकी low value उतना ज़्यादा cold है, ठीक है. That's what the scale would mean. Similarly for grade, you could assign A, B, C, D, E है अगर, तो आप A को जो है वो 1 असाइन कर सकते हैं, B को 2 असाइन कर सकते हैं, C को 3 असाइन कर सकते हैं, and so on. In that case, the lower value you have, it would mean कि आपका ग्रेड उतना अच्छा है, ठीक है. तो अगर आपको ऑर्डिनल वेरिएबल हो तो आपको सिर्फ आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो इस तरह से नंबर्स असाइन कर दे यहाँ पे. अगर आपका ऑर्डिनल वेरिएबल नहीं है, so ordinal variable अगर आपका नहीं है, so for example you're talking about different colors, for example, so blue, red, orange. Now these are different colors, इनका कोई order नहीं है as such. One you cannot say one is more than the other or one is higher or lower than the other. अब इनमें कोई order exist नहीं करता, तो these are called nominal variables. Categorical variables के अंदर remember दो different types होती हैं, ordinal variables and nominal variables. तो यहाँ पे आपका order exist नहीं करता. इस केस के अंदर you would have to create multiple dummy variables, ठीक है. So you, for example, आप इसी example को अगर देखें, अगर आप कहें कि hot, medium, cold में कोई अगर order exist नहीं करता, let's say, so you could create different variables. So you could say you have a variable that is hot. It'll have a value of 1 if it is hot. It'll have a value of 0 otherwise, and so on for medium and cold. आप तीनों के अलग-अलग dummy variables भी बना सकते हैं. So regression में जिस तरह आप 1 less than the total possibilities करते हैं, तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है. यहाँ पे आप जितने आपके पास options है, उतने variables भी create कर सकते हैं. That's not going to create any problems. But if you, even if you want to do one less, that's also going to work completely fine, because that captures all the information from that, ठीक है. So आप या दो variables यहाँ पे create कर लें या 3 variables create कर लें, that's fine, ठीक है. So इस तरह से आप binary या categorical variables को numbers में जो है वो convert कर सकते हैं, ठीक है. Now the third thing is, how do you choose a value of k? Okay, how do you choose a value of k? Should you do a 1 nearest neighbor, a 2 nearest neighbor, a 3 nearest neighbor, or so and so on? How do you choose that? So remember the bias variance trade-off that we discussed in the previous weeks. Variances कि आपका कितना ज़्यादा जो है वो models एक दूसरे से differ करते हैं. Bias would be कि आपके on average आपकी predictions कितनी accurate हैं. We're going to have the same problem here. आपका जो bias variance trade-off है, and that's going to be because of this choice of k. If you look at this graph here, आपके पास let's say ये data set है. It has multiple categories, ठीक है. It has multiple categories. We are dividing it. Let's say it has 2 categories.
ब्लू एंड रेड हेयर, ठीक है, आपके पास ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं. You want to build a k nearest neighbors method based on this. Now let's say आपके पास अगर k की वैल्यू 1 होती, 1 would mean you're talking about one nearest neighbor. So one nearest neighbor का मतलब क्या है, जो भी आपका closest neighbor है आप देखें उसकी क्या वैल्यू है, आप इसको भी वही असाइन कर दें. ठीक है, आप नियरेस्ट नेबर को देखें उसकी क्या कैटेगरी है, अब इसको भी वही कैटेगरी असाइन करते हैं. दैट वुड बी वन नियरेस्ट नेबर. इस केस के अंदर आपकी वेरिएंस जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल. अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि वेरिएशन इतनी ज्यादा होगी, आप सिर्फ एक और वैल्यू को देख रहे हैं क्लोजेस्ट को, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी वेरिएशन बहुत ज्यादा इस तरह से हो जाएगी. The other extreme could be कि आप बहुत ज्यादा नेबर्स को कंसिडर करें. So let's say considering 99 variables, आपके पास 99 nearest neighbors, ठीक है. In this case your variance is going to be fairly low because आप हर वेरिएबल के लिए 99 जो है वो नेबर्स कंसिडर कर रहे हैं और उनकी बेसिस पर ये जो है प्रेडिक्शन कर रहे हैं. In that case आपकी वेरिएंस इज गोइंग टू बी फेयरली लो बिकॉज आप जब इतने सारे वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं तो आपका जो है जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम होते हैं. सो फॉर एग्जांपल आप कि एक वैल्यू इनमें से कोई चेंज भी होती है बहुत ज्यादा, तो बाकी 98 वैल्यूज की वजह से वो एक वैल्यू जो चेंज होती है उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता. सो योर वेरिएंस इज गोइंग टू बी फेयरली लो हियर. लेकिन इस केस के अंदर आपका बायस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है बिकॉज आप जब इतने सारे नेबर्स कंसिडर कर रहे हैं, जो 99 नियरेस्ट नेबर्स भी होंगे, जो इनमें आप कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन भी कंसिडर कर रहे होंगे जो इतनी ज्यादा क्लोज नहीं है आपके साथ. ठीक है, बिकॉज आप इतने ज्यादा वेरिएबल्स, इतने ज्यादा आप नेबर्स कंसिडर कर रहे हैं कि आप फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट से होते होते जब आप 90th नियरेस्ट तक पहुंचेंगे, दैट माइट नॉट बी वेरी क्लोज टू दिस न्यू डेटा पॉइंट आफ्टर ऑल. ठीक है, वो बहुत बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा. तो आप इतने सारे नेबर्स को कंसिडर करेंगे, आपकी एक्यूरेसी इज गोइंग, आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो अगेन यू गोइंग टू हैव द सेम ट्रेड ऑफ between choosing a very low k value and a very high k value. ठीक है, and the optimal is going to be somewhere in the middle. ठीक है, so आपका केस है कि आपका बहुत ही ज्यादा इस तरह से जो है वेरिएंस हो. दूसरा आपका केस है कि आपकी कम वेरिएंस हो लेकिन यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी इफेक्ट होगी. The best scenario, the optimal scenario is going to be somewhere in the middle. So if you look at it like this, आपके पास x axis पे यहाँ पे model complexity है. So model complexity basically increases when you have small k values, because यहाँ पे देखें आपका ये जो green line है ना, ये आपका एक तरह से model classifier है. So green line के जो नीचे वाले हैं वो red classify हो रहे हैं, green line के जो ऊपर वाले हैं वो आपके blue classify हो रहे हैं. यहाँ पे भी ये green line जो है that's sort of क्लासिफाइंग योर मॉडल. जितनी आपकी हाई वैल्यू होगी उतना आपका मॉडल उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा. वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास एरर है. ठीक है, सो इनिशियली जो आपके पास लार्ज के है तो आपका जो ट्रेनिंग डेटा होगा उसका जो एरर होगा वो बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, ग्रेजुअली अगर आप k की वैल्यू कम करते जाते हैं, ट्रेनिंग डेटा पे जो एरर है दैट्स गोइंग टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. ठीक है, sorry I couldn't can't get. Yes, Abdul Basit, we'll just end on this slide then. Okay, yeah.
Okay, it's 1:15. Acha, so let me just give you a quick, yeah. So let me just complete this point. आप जैसे जैसे k की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, आपका बायस डिक्रीज करता है. जैसे जैसे आप k की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, आपका वेरिएंस जो है वो इंक्रीज करती है. ठीक है, and it's also true the other way around, and your optimal is going to be somewhere in the middle. And the other thing is, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट यहाँ पे जाएंगे, जैसे आपका स्मॉल के, जैसे जैसे आपकी k की वैल्यू स्मॉल होती जाती है, आपका ट्रेनिंग डेटा जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता जाता है. ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो आपकी प्रोडिक्शन है वो ज्यादा एक्यूरेट होती जाती है, लेकिन आपकी जो टेस्ट डेटा के ऊपर जो आपकी प्रोडिक्शन है, ये वैलिडेशन डेटा के ऊपर आपकी जो प्रोडिक्शन है, वो आपकी कम एक्यूरेट होती जाती है. वहां पे आपका एरर बढ़ता जाता है. ठीक है, so, जैसे आपका k लार्ज होगा, जैसे जैसे आपका k लार्ज होगा, उतनी आपकी जो है अंडर फिटिंग हो रही होगी, और जैसे जैसे आपका k जो है स्मॉल होगा, उतनी ज्यादा आप नॉइस को जो है वो एक तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे, जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं. आप बहुत सारी नॉइस कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे, उतनी आपकी ज्यादा ओवर फिटिंग हो रही होगी. एंड द बेस्ट केस सिनेरियो इज गोइंग टू बी समवेयर इन द मिडल. एंड जनरली देयर इज गोइंग टू बी अ रूल ऑफ थंब कि आपके जितने भी टोटल जो है ऑब्जर्वेशंस हैं, the optimal k is going to be somewhere around this value square root of n. Now this is just a rule of thumb. It's आप actually में तो इसको टेस्ट ही कर रहे होंगे using different values of k, or and finding out the best, finding out the one that has the best performance. लेकिन eventually, in most of the cases, that value is going to be somewhere around this number, square root of n. जो आप k की values choose करेंगे at the end, that's going to be a bit close to this. I'll repeat this point in the next class again, and we'll continue from here. And what I'll want is कि हम ये next time complete करके we start with some introduction to on the next model as well, that is the decision tree method. हम वो भी थोड़ा सा start कर देंगे next time पे, ताकि we're able to complete some of that in the next week. So we'll stop here and we'll continue from here in the next class, inshallah. And I'll repeat this slide in the next class again because we did it in a bit of a hurry. तो हम next class में इसको भी दोबारा से एक दफा consider कर लेंगे. So I'll end here. The class has ended now. If those of you who want to leave, you are free to leave, but I'll be here for answering your questions now. If you have any questions, let me know. So Abdul Basit, if you have a TA duty right now, you are free to leave. Asad, Azhar, आप लोग भी जा सकते हैं. But if you have any questions, you can stay back. I'll be here for some more time. फिर वो असाइनमेंट के मार्क्स क्या होगी चेक? Assignment 1 नहीं, वो भी चेक नहीं हुई है. हमारी सॉरी, हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हो सका छुट्टियों में. आई वाज ट्रैवलिंग अ बिट एज वेल, तो आई विल गेट एन अपडेट फ्रॉम Abu Bakr after the class abhi as well, and we will. Okay, so today's lecture and the last lecture. अच्छा, last lecture क्या upload नहीं हुआ हुआ? 21st May वाला. Okay, I'll do that as well. Okay, so last lecture or aaj wala. Okay, I'll upload that on that playlist. Okay, any questions on what we did today? Does it sound very difficult, or is it fairly intuitive? Isme kya problems?
So how will we be tested on this? How will we be tested on this? So you need to understand the whole algorithm, how it's working. You need to understand why we do scaling, why we do each of these things. आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. यू शुड बी एबल टू explain why we do these things, and of course you need to be able to implement these methods in R as well, and we'll be discussing that uh, in the next class as well. फिर तो हमारे फाइनल में इसको हमने R पे भी इम्प्लीमेंट करना है. जी आर पे इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली आपके जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल जस्ट हैव टू फॉलो अ सर्टेन कोड फॉर दैट. उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना सोचने की ज़रूरत नहीं होगी. I'll be sharing the code that we'll be using for it. आपका जो मेन काम होगा वो उसके रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा. सर हमने इस कोर्स में इतने ज्यादा कोर्स R के अंदर किए हैं, तो हमें इतने आप ज़्यादा उसकी तो नहीं लिस्ट किया दें. हमने. नहीं मतलब हर किसी के अलग अलग हैं, जिस तरह वो जॉइनिंग टेबल का अलग था, उसके बाद बाकी जो है हमारे वो डीप लायर के अलग थे. तो इतना कुछ याद तो रहेगा नहीं, तो सर आप हमें उसकी प्रोवाइड करें, क्योंकि आप कह रहे थे हम ना गूगल कर सकते हैं और जी ना हम. वो सारे कोड आपके पास होगा, आपको याद कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको. थैंक यू. ठीक है. सर अपना एग्जिस्टिंग कोड यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कोड भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं मतलब है. जो अपना जो हमने किया ही हुआ है. यस, द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते. एंड दैट्स those of you who are from CS background, you know it very well. That's very easy to catch, and I hope you can explain it to your BSMT colleagues as well. Okay, वेरिएबल्स के नाम चेंज कर देने से और इस तरह के चेंज करने से कोई इतना फायदा नहीं होता है. इट्स फेयरली इजी टू कैच. तो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो इट्स योर ओन वर्क, और आप जो है किसी और से जो है कंसल्ट नहीं कर रहे हो ड्यूरिंग द एग्जाम. एंड इफ यू यूजिंग योर ओन प्रीवियस कोड दैट्स फाइन. आप जो है जो हमने क्लास में एग्जांपल्स किए आप एग्जैक्टली वो यूज करना चाहते हैं, दैट्स आल्सो फाइन. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर क्योंकि इनिशियल वाली में तो आपने एक प्रोजेक्ट भी डाला हुआ था, लेकिन अब तो उसके लिए भी टाइम नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल नहीं हो रहा. नहीं प्रोजेक्ट हो रहा है, ये आप का ख्याल है, लेकिन प्रोजेक्ट हो रहा है बिल्कुल अभी. क्योंकि वो प्रोजेक्ट वाली जो ज़्यादातर चीज़ें वो हमने अभी इतनी कुछ काफ़ी तो कर ली है डिस्कस. ये जो मॉडलिंग है वो हमने डिस्कस नहीं की थी, तो इसलिए मैंने अभी वो रिलीज भी नहीं किया. बट you'll have time for that after the exams as well. You'll have at least a week after the exams. और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा. Since it's a group project, it should not take you too long. आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास एग्जाम्स के बाद भी उसके लिए टाइम होगा, ठीक है. सो यू नीड टू डू सम वर्क. पहले आप इतना से जो है कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, कुछ इंडिविजुअली टास्क्स जो है वो डिवाइड करके जो है वो कुछ काम शुरू कर सकते हैं इफ यू वांट. दैट्स आल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम. लेकिन द डिलीवरेबल्स आर गोइंग टू बी आफ्टर योर फाइनल एग्जाम्स आर ओवर. क्या वो उसके बाद ही होंगे. अभी आप लोगों की असाइनमेंट्स भी चल रही हैं, तो आई डू नॉट वांट टू बर्डन यू अ लॉट इन दैट सेंस कि आपका प्रोजेक्ट भी साथ ही आ जाएगा, तो फिर वो एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ी इफेक्ट हो सकती है. आई जस्ट वांट टू गिव मोर टाइम फॉर दैट कि आपके पास फाइनल एग्जाम के बाद भी उसके लिए टाइम हो. Okay, if there are no other questions, I think I'll stop here. Yeah, I'll wait for a few more minutes. And then Abu Bakr, can you stay back? I want to just discuss about the assignments. Okay, sir.
Okay, I think we have no other questions. So those of you are still here, you can leave the meeting then. So I can have a chat with Abu Bakr.